will not be able to read everybody's comment today because I got a mobile. Ankit, Satyajit, Santosh, Naren, Saili. Namaste, everybody. Wow. Lovely to see all of you this very morning. इसमें ना option नहीं है कि I can have my chat as well as my screen on. So either I can see you or I can read your comments. आज ऐसे ही होने वाला है. So namaste, Vinod, Anish, and those of you who just passed by. Some names have zipped by. Rajender. How was your week? I had a great weekend and I had a lovely week which went by. And all of you, those who have come in for the first time for Happy Minds, welcome to Happy Minds. Namaste, everybody. It's a pleasure to see you. And this is not the way Happy Minds are conducted. I don't travel every HM to some part of the world and then take HMs from there. It happened to be my anniversary yesterday, and so इसलिए हम anniversary बनाने के लिए Maldives आए. And I thought, let me not break the routine of Happy Minds. Let me continue. So here I am, early morning with you. It is 6:30 here. तो 6:30 बजे यहाँ का चालू हुआ. अब ये thank you everybody. बस एक ने wish कर दिया, अभी सबने wish कर दिया समझो. अभी नहीं तो पूरी झड़ी लग जाएगी happy anniversary की. So thank you everybody. Thank you. And we had a lovely time yesterday. And looking forward to another couple of days here. Those who have joined in for the first time, you can just type in, which city you're from, and you can just type in first and the city you're from. So मालूम पड़ जाएगा कि आप पहली बार आए हो. And so we come to know from which part of the country, which part of the world you have joined us from. Last week was an awesome HM, and I think and I believe that आप लोगों को याद होगा कि मैंने last HM में क्या बातें करी थी आप लोगों के साथ. So some people have joined from Buldhana, Maharashtra. Welcome to Happy Minds. And I've got a few success stories. We had Imtex Expo happening in Bangalore, and quite a few Chrysalians, quite a few of my participants were there. They said they had an awesome response, and they're looking forward to some great business in months and years to come. So all the best who were there for Imtex. And a lovely small success story has come in from one Rohit Adhikari from Dehradun, and I got it written here in my other phone here is, he says, sir, I had attended HM last year where you spoke about goals and I made 8 goals. Sir, बहुत खुशी हो रही है कि उसमें से 4 गोल हो गए. हेल्थ, बिजनेस और पेंटिंग का गोल पूरा हो गया. बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. एक बार बीच में बुरा लगा कि सारे गोल्स अचीव नहीं हुए, लेकिन 2-3 HM पहले आपने कहा कि कुछ भी हो जाए तो अच्छा ही है. And now I feel great and I've set bigger goals this year. Thank you so much. Wow, this is such a wonderful feedback and sharing. God bless you, Rohit, for the coming year. And मुझे लगता है कि जैसे last time मैंने, I think last a couple of HMs back मैंने बोला था कि it does not matter कितने goals पूरे हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं. बिना लिखे तो कुछ भी नहीं हो रहे ना. So why not write it down? Why not pen it down? Why not capture it? And the more you capture it, the more is the possibility कि कुछ हो सकता है. तो अगर 50% भी goals पूरे हो गए तो अच्छी बात है. उससे तो कहीं अच्छे हो जब आपके कुछ नहीं हो रहा था. So at least something is lined up, something is taken care of. So wish you the very best इस साल. And जिन लोगों ने इस साल के कुछ objectives, goals line up नहीं किए हैं, तो मेरा ये request है आपसे कि do line up, do share with yourself कि क्या करना चाहते हो इस साल. समय तो निकल रहा है. देखो almost January is over. And इस साल का एक महीना, almost 10% of the time is gone. And you know how much you have achieved. You know how much you have, been able to achieve for yourself. ये आप सबको मालूम है. तो no need to for somebody else to tell you कि तुमने किया नहीं किया. ये समय निकल गया और इस समय में बहुत सारे मौके थे. And I think that's what the beauty of time is. Time brings with itself a lot of opportunities. हम उसमें से क्या पकड़ सकते हैं, क्या नहीं पकड़ सकते, ये हमारे ऊपर है. लेकिन समय तो लाते हैं साथ बहुत मौके. तो ये 30 दिन जो निकल गए, कुछ लोगों ने निकाल दिए, कुछ लोगों ने पास कर दिए और कुछ लोगों ने जी लिए. तो ये 30 दिन जो हैं, ऐसे और बाकी 330 दिन हमारे सामने हैं. And I think we can still maximize, we can still make the most of those days which come. So just wanted to share this, that if you have not set your goals so far, do set, do write down what you want to do. तो शायद कुछ होने की possibility create होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस साल इस HM में
Last HM I had spoken about the 4 resolutions, अगर आपको याद होगा. I had spoken about being self-disciplined. याद है नहीं याद है आपको? Let me see if you remember it. Can you type it? Let me see if you have those resolutions. Let me see if I can read. आप लोग को कितना याद है last HM का? हाँ. I had spoken about 4 resolutions for 2023, which I would recommend. जो मैं चाहता हूँ. Discipline by your own. Okay. Call friends at home. Okay. मैंने आपसे ये 5 resolution share किए थे. So I'd spoken about one that be self-disciplined. याद है आपको? Stay away from noise. बहुत से लोग तो blank है. अच्छा हुए भी थे क्या resolutions? So I'd spoken about 5 resolutions. Number 1, I'd spoken about be self-disciplined. I did not speak about being disciplined, but being self-disciplined. मतलब आप खुद से disciplined हो, right? And you're not under any pressure from outside. You're not under any kind of outside force के चक्कर में आप disciplined हो रहे हो. So that is good, but that will not give you the best from your side. So जब आप खुद से कहते हो कि this is the choice I have made to be disciplined, that is called self-discipline. So discipline लोगों की कमी नहीं है, self-discipline लोगों की बड़ी कमी है कि जब कोई ना हो, कोई प्रेशर ना हो, कोई फोर्स ना हो, कि आप फिर भी एक disciplined लाइफ जीते हो. ट्रैफिक कांस्टेबल ना हो फिर भी आप क्या सिग्नल पे रुकते हो. गवर्नमेंट का प्रेशर ना हो क्या फिर भी आप टैक्सेस टाइम पे भरते हो. कि बॉस का प्रेशर ना हो फिर भी आप ऑफिस टाइम पे पहले पहुंचते हो. कस्टमर का प्रेशर नहीं है उसके बाद भी आप डिलीवरी टाइम पे करते हो. राइट. सो this is all where you are yourself saying I will take care of my behavior. So that is self discipline. And second हमने बात करी थी कि call people at home, and I had spoken this that G20 हुआ, and G20 में या हो रहा है अभी इस साल G20 होते रहेगा अलग अलग शहरों में. Pune में it happened a few weeks back, and I was sharing on this very note that Pune सज गया. पुणे में लाइट्स लग गई, रोड साफ हो गई, साइकिलिंग ट्रैक्स का एक डिमार्केशन हो गया, कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो फास्ट ट्रैक पे आ गए, कुछ काम शुरू हो गए, कुछ काम खत्म हो गए. And it was because guests from all over the world would be coming, and the government of India wanted to show that we are doing some work and we have done some work. तो अब वो कितना टिकेगा नहीं टिकेगा, that's a different story, but at least कुछ समय के लिए कुछ हमारा शहर तो साफ हुआ, कुछ समय के लिए कुछ चीजें तो अच्छी दिखने लगी, कुछ समय के लिए रात को ड्राइव करने में तो आनंद आने लगा. And that's what happens when you have people at home. So when you call people at home, कुछ तो अच्छा होता है, कुछ नया होता है, कुछ अच्छे खाने बन जाते हैं, कुछ कर्टन्स का पर्दे बदल जाते हैं या धुल जाते हैं, या सोफे नए आ जाते हैं, कटलरी नई निकल जाती है. And a lot of things happen when you call people at home. I think खुशहाली आती है. And who doesn't want happiness? Who doesn't want खुशहाली at home? So घरों में बुलाओ. And this was one point which was highly appreciated. We got so many feedbacks on this, that this was one beautiful point. And I feel ये तो छोटा सा पॉइंट था ना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी. आज से 20-25 साल पहले ये अगर आप किसी को शेयर करो कि अपने घर पे बुलाओ, तो वो आपको ऐसे देखता कि यार तुम बात क्या कर रहे हो. बिकॉज दिस वाज अ रेगुलर अफेयर. पहले लोग घर में बुलाते थे, किसी को मिलना हो तो कहते घर पे आ जा, चाय पे आ जाओ, लेट्स हैव टी टुगेदर. अब तो चाय पे बुलाना, घर पे बुलाना has become kind of a burden, has become kind of a load. And हम अनजाने जाने में कतराते हैं बुलाने में, तो we want to meet outside in a cafe, हम कहीं रेस्टोरेंट में मिल लेंगे, बाहर मिल लेंगे, लेकिन घर में नहीं बुलाते. Of course you got to know whom you have to call at home, but घर में बुलाना इतना कम हो गया है कि एक एक घर का आनंद जो है ना, जो होता है वो नहीं आता है. तो मुझे लगता है कि this year make a list of people whom you would want to call at home. तो हर महीने कम से कम एक तो कोई घर में आना चाहिए. तो हर महीने जो है ना एक खुशहाली की एक लहर घर में आएगी. बिकॉज आई थिंक मेरा ऐसा मानना है हमेशा कि घर जो है में जो दोस्त आते हैं ना घर में, तो फ्रेंड्स आर दी ऑर्नामेंट्स ऑफ अ लाइफ. हमारी जिंदगी के गहने होते हैं फ्रेंड्स, और जिसकी लाइफ में जितने फ्रेंड्स होते हैं वो उतना अच्छा दिखता है, ऐसा मुझे लगता है. So these ornaments of your life, don't keep them for friendship day. Don't wish them for on friendship day कि August आएगा, हम first Sunday of the August हम friendship day पे wish करेंगे. You can call your friends anytime, and the more you call them, the more you will also be able to go to their houses. I believe that. So I think somebody mentioned that हमने अपना घर उसी दिन साफ किया. So that was there.
So this is one second thing which I shared with you. Third thing I shared with you is stay away from the noise. कि बहुत ऐसा होता है कि हमने कुछ सेट किया होता है टारगेट्स, हमने कुछ जिंदगी में एक जीने का तरीका सेट किया होता है, एंड देन somewhere we get distracted because there's so much of noise around us. There's so much of noise in sense. आवाज वैसी आवाज नहीं, distractions बहुत है हमारे आसपास. Whether it be a WhatsApp noise, whether it be your social media noise, whether it be you are getting the news so fast. किसी ने कुछ अचीव कर लिया तो उसकी न्यूज बहुत जल्दी आती है, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया उसकी न्यूज जल्दी आती है. So we are getting distracted by a lot of things. So stay away from the noise. जितना हो सके अपने अपने आप को दूर रखो, हो सका have a structured way by which you can stay away from the noise. And the fourth thing which I shared with you was see if you can stay on track. So have a tracking mechanism, use tools, whatever tools you want to use. And I had suggested that you use life leadership app. Hey, if you are using digital medium, why not use it? है और आपके फायदे के लिए है, वो टूल बना हुआ है. It's there in Android, it's there in iOS, दोनों के लिए बना हुआ है. पैसा खर्च किया हमने, यूज करो उसको, इस्तेमाल करो, and make your life. So many people are using it, so many people are benefiting from it. तो एक बहुत बढ़िया टूल बना के रखा हुआ है हम लोगों ने to keep you on track. So हमने रोज का you can make a to-do list and keep yourself on track. You can track your goals and you can track your habits. So बहुत अच्छा बना हुआ है. So keep yourself on track. And the last point I shared was see if you can make a habit of giving nothing less but your best. Nothing but your best. And जितना ये कर पाओगे ना, कि कम करो चलेगा यार. You don't have to do many things in life. But जो भी कर रहे हो ना, you say that I will give nothing else but my best. And if you can focus on that, and if you can live your life like that, तो फिर देखो कितनी चीज अच्छी हो जाएंगी. It is not about the world's best. कि दुनिया का सबसे अच्छा करूंगा मैं. नहीं, it's about my best. And I can be so different in the world. ना? My best and the world's best can be different. And whenever you have given your best, हमेशा ऐसा हुआ है कि the world has also given its best to you. And that's a simple, I think, एक सौदा हो सकता है, एक ट्रांजैक्शन हो सकता है दुनिया के साथ, कि हम अपना बेस्ट देंगे, तो दुनिया भी कहेगी यार we'll also give your best, our best to you. The challenge is that हमारा बेस्ट ही नहीं निकल रहा है. Challenge is we are just giving whatever is happening. और जो अप्रोच हमारा चलता है, एटीट्यूड चलता है, हो जाएगा, समझ लेंगे लोग, that approach is not that good. वो अप्रोच हमें मार देता है. वो अप्रोच हमें जो है कहता है कि साहब जो भी दे रहे हैं तो ठीक ही दे रहे होंगे. तो आई फील दैट एक खुद से अंदर से ना एक आवाज आनी चाहिए कि नो दिस इज नॉट माय बेस्ट. Whether it be your regular, in all your regular activities, you don't have to wait for a special tournament or a special time to give a best. It's in your it's giving your best is as a habit. Then excellence is the way you live. And excellence is all about कि जो मैंने किया है क्या वो मेरा सबसे बेस्ट है. And if this happens, I think a lot of things can change, can improve for the better in our lives. चाहे वो आपके घर का रोज का खाना बनाना हो, and you're just saying, can I give my best? And that's it. So you're working in your office, whatever work you're doing, can I give my best? And if every day we give our best, why will our lives not be the best? हम कितनी भी प्लानिंग कर लें लाइफ की, कितने भी बड़े हम गोल सेट कर लें, जीना तो हर दिन ही पड़ेगा ना. Living life is on a daily basis. It cannot be lived a year at a time. It has to be lived a task at a time. It has to be lived a moment at a time. Am I right or not? When it has to be lived a moment at a time, why should that moment not be the best? तो आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप अपनी जिंदगी को अच्छा जियो. आपसे मैं कह रहा हूं कि अपने इस मोमेंट को अच्छा जियो. जिंदगी बहुत बड़ी है, उसके बारे में सोचना है, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट. बट ये मोमेंट तो सामने है ना. इस मोमेंट में अगर बेस्ट दे दिया तो मेरे सामने तो ये एचएम ही है ना. This is the moment right now. It doesn't matter what lies ahead of me. It doesn't matter what was behind me. जो हो गया वैसे भी उसका कुछ मायने नहीं है, जो आया नहीं उसका भी क्या मायने है, जो सामने है उसका मायने है ना. तो ये सामने जो है, ये मेरे सामने जो चीज है, am I giving my best? तो मैं जब सुबह यहाँ उठा and we were struggling where to keep the phone and where to. तो अभी भी अगर मेरा आप फोटोग्राफ लोगे तो there is a table, उसपे सूटकेस है, उसके ऊपर एक कुशन कवर है, उस कुशन के ऊपर हमने मोबाइल रखा है, उसके पीछे एक आईपैड रखा है.
So we were struggling with the iPad because I thought I'll take an HM from the iPad. तो iPad में वो headphones नहीं connect हो रहे हैं because उसका port अलग है. जय हो Apple की कि they kind of they have different ports for different mechanisms. So ये headphone की वायर उसमें नहीं लगेगी. AirPods जो है they will not last for more than half an hour or 45 minutes. तो AirPods भी नहीं लगा सकते. And we were struggling in the morning what to do. कौन सी location में बैठूं? And then I said no यार मुझे तो best अभी है ना best देना है इस समय के हिसाब से. So then I said, this scene behind me, I think is such a best, and because मेरे लिए भी पहली बार है ना, it's a first for me that I'm taking an HM here and with an ocean behind me and बगल में rooms है. I don't know what they will be thinking. आदमी सुबह सुबह क्या ये चालू हो गया, बात करना शुरू कर दिया इसने. And but that's the way it is. So आप अगर ये सोचते हो ना कि यार I have to give my best, तो बहुत सारे options खुलने चालू हो जाते हैं. बहुत सारी चीजें आपको एकदम दिखने लग जाती हैं या बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं. एंड me and Rachna we were struggling in the morning here what to do, how to do. So but nevertheless I think isn't it a beautiful view? क्या लगता है तुम्हें? Isn't it a wonderful view? अभी अभी मेरे कहने पे तुम वाह वाह टाइप करोगे. चलो मैं एक बार मोबाइल उठा के तुम्हें दिखाता हूँ. So this is where it is. So this is where I'm staying. So हाँ देखो. So this is the place and this is all ocean. So we are in the middle of an ocean on a small island and there's these beautiful rooms here which have been set up. And तो मैं दिखाऊं मेरा ये सेटअप देखो ये सूटकेस के ऊपर कुशन एंड कुशन के ऊपर ये मेरा फोन एंड हियर आई एम अगेन बैक. सो ये कैमरे के पीछे की दुनिया ना बड़ी अजीब होती है. ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया सेटिंग वेटिंग करी होगी लेकिन सेटिंग सूटकेस के ऊपर ही हमारी. हाँ लवली टू सी. Oh, thank you, Satyajit. We all are missing. अभी तुम लोग पता है all are missing. अपना पैसा खर्च करो जाओ. नितिन बोलते हैं we are missing it. So next time you plan to visit Australia. Oh yes. Khushbu, you're from you've reached Australia. That's so nice to see you. Lovely. I'm sure you're settled down there. Last HM I spoke about you, Khushbu. That's nice. Mansi, Koja. Chalo, I'm just reading some comments. बहुत बढ़िया, great. So this is what it is and अभी बहुत से लोगों ने ना मेरे से वो पूछते रहते हैं. In fact, the question which if I was to go through the questions which people normally ask me is on the success side, that what can make people successful, and I've answered this so many times in so many different ways कि एक इंसान कामयाब कैसे हो सकता है. In fact, the 5 resolutions I've spoken to you about, 5 resolutions which I've shared with you कि ये 5 resolutions हैं. तो अगर आपने ये 5 resolutions पे काम किया, why will you not be successful? और ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो मैंने से 5 बोली है. मैं कह रहा हूँ बहुत को छोड़ो, ये 5 को पकड़ लो and you will see that in some or the other area in life आप कामयाब बन जाओगे. तो एक ने मुझे क्वेश्चन किया कि सर आपने एक एचएम में बोला कि स्टॉप सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ अदर्स. आप ऐसा कैसे बोलते हो कि किसी की कामयाबी को सेलिब्रेट मत करो. I said, see, it is not about not feeling happy about, you're not understanding what I'm saying. I'm saying stop celebrating means the moment you celebrate ना तो आपका फोकस होता है कि अरे यार इनका ऑफिस हो गया, इनका टर्नओवर बढ़ गया, इनकी गाड़ी आ गई, इनका घर हो गया, they're having a wonderful life. I'm not saying feel sad about it, but I'm saying ask yourself where the focus is. So when you celebrate the success of others, you unknowingly, knowingly, you kind of focus on what they have achieved. और उनके अचीवमेंट से आपकी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. कुछ लोग तो वैसे उदासी हो जाएंगे किसी और की कामयाबी देख के. कुछ लोग तो वैसे भी they will feel jealous. तो किसी की कामयाबी अगर आप बोलते हो कि उसमें आप सेलिब्रेट करते हो तो you end up looking only at their achievements, only at their possessions, only what they have got.
But if you were to celebrate their struggles, if you were to celebrate their journey, then you will see a lot of things. Because the secret of success is not in what they've achieved. It is somewhere else. The secret of their success is also not in what they did to achieve that. तो किसी ने रिस्क लिया होगा, किसी ने दिन रात मेहनत करी होगी, किसी ने जान लगाई होगी, किसी ने कुछ और काम किया, कमिटमेंट से जिंदगी जी होगी. तो सबने इन्होंने जान लगाई, सबने ने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी वहां पर उनकी सीक्रेट छुपी नहीं है कामयाबी की. तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज समवेयर एल्स. इट लाइज इन व्हाट मेड दीस पीपल डू व्हाट दे डिड. तो इन्होंने रिस्क क्यों लिया, इन्होंने ये मेहनत क्यों करी, ये सुबह क्यों उठते थे, ये क्यों दिन रात एक करते थे. Why they would study, why would they would go through some training programs, why would they kind of reinvent themselves, why they would go innovate things, why would they go for technology, क्यों ये करते. तो ये इन्होंने किया. But secret of success lies in what these men do. तो जितना इस पर सोचा गया उसमें ऐसा निकला कि कामयाबी जो है ये हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स पे से नहीं आती है कि we follow our likes and we follow our dislikes. We had a wonderful night yesterday, and normally I avoid my Fridays, but पिछले कुछ ऐसा हो गया कि मेरे Fridays जो है बड़े पैक्ड हो गए. But every Saturday is HM. तो मेरे likes dislikes का कोई फर्क नहीं पड़ता. If I can subjugate, I can subordinate my likes and dislikes to my higher purpose. कि जो मेरी लाइफ का बड़ा पर्पस है उसके लिए अगर मैंने अपने लाइक्स डिसलाइक्स को सबऑर्डिनेट कर दिया कि मेरे पर्पस आगे मेरे लाइक्स डिसलाइक्स की कोई अहमियत नहीं है. पर्पस की अहमियत है. जब जब अगर मैं ऐसा सोचूंगा और जीऊंगा तो कामयाबी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मेरे लाइक्स डिसलाइक्स को फॉलो करके कामयाबी कभी नहीं आई है और ना किसी को आई है आज तक. कि अगर मुझे पसंद है सोना तो मैं सो जाऊं फिर मैं वो कामयाबी आ जाएगी, मुझे ना पसंद है ये खाना खाना तो फिर मैं वो खाना नहीं खाऊंगा और मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी. तो मेरे लाइक और डिसलाइक से कामयाबी का कोई लेने देना नहीं है. तो फिर कामयाबी का लेन देना किधर है. तो कामयाबी का लेना देना जो है वो है कि मैं इन लाइक्स और डिसलाइक्स को साइड रखूं और अपने पर्पस पे ध्यान दूं. What is the bigger objective? What's the bigger purpose I'm chasing? So every morning you're going to ask yourself, ना, कि आज मैं उठा हूं, आज मैं ये दिन जी रहा हूं, तो आज का पर्पस क्या है. फॉर एग्जांपल वी आर हियर इन Maldives, so the purpose is to have a great time. So I'm here with हमारा पूरा ट्राइब का ग्रुप आया हुआ है. The tribe batch is there. So we are 8 couples here. And ये ट्राइब वो बैच है जो मेरे साथ पिछले 3 साल से है. And we have been, it's a board of entrepreneurs who are there with me. तो हमने फिर इन्होंने प्लानिंग किया कि नहीं सर we are going to celebrate your anniversary with us. So here we are, all 8 of us, 8 couples. तो हम 16 लोग इतने धमाल किया हुआ है हम लोगों ने यार यहाँ इस रिजॉर्ट में कि every now and then the resort manager is calling on us कि भाई आप जो है या तो वापस इंडिया चले जाओ या फिर कमरे में बंद रहो, because we are having such a great gala time. The purpose is very clear. The purpose is to have the greatest time. ये दिन कहाँ आने वाले हैं वापस. So हमें you for that moment the purpose is clear. When you go back to work your purpose is clear. When you're making your body the purpose is clear. When you're in a relationship the purpose is clear. तो जो भी आपका पर्पस है उस पर्पस के लिए you got to understand कि कुछ चीजें मुझे पसंद आएंगी, कुछ चीजें मेरे पसंद नहीं आएंगी. तो मेरी पसंद नापसंद का कोई लेना देना नहीं है मेरी कामयाबी से. ऐसे अगर आप सोच में लाओगे so why will you not be able to work on. So अगर आप देखो कामयाब इंसान और एक नाकामयाब या साधारण इंसान जो है, फर्क क्या है. जो आदमी कामयाब है उसको भी ना डाइट करना अच्छा नहीं लगता ना, उसको भी सुबह उठना अच्छा नहीं लगता. और एक साधारण इंसान है उसको भी अच्छा नहीं लगता. लेकिन अच्छा ना लगने के बाद भी कामयाब इंसान सुबह उठता है. वो अच्छा ना लगने के बाद भी सुबह उठता है. जो साधारण है उसको अच्छा नहीं लगता इसलिए उठता ही नहीं है. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को भी एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज तरीके से बिजनेस चलाना उसकी भी जान पे आती है कि उसको रेगुलर मीटिंग्स लेनी है, उसको सबसे बातें करनी है, उसको रिपोर्टिंग लेनी है. और एक साधारण एंटरप्रेन्योर जो है
उसको भी मजा नहीं आता, अरे ये कितना मीटिंग लेने का है, कितना ऐसा स्ट्रक्चर में जीने का है, उसको भी मजा नहीं आता। वो मजा नहीं आता इसलिए नहीं करता, इसको मजा नहीं आता फिर भी करता है। एक कामयाब एंटरप्रेन्योर सीखता है कि कैसे मैं अच्छे इंटरव्यूज लूं। एक साधारण एंटरप्रेन्योर इंटरव्यू लेने के लिए सोचता है यार मैं सीखूं क्या, मैं समझूं क्या। वो डेलीगेट कर देता है अपने रिसेप्शनिस्ट को, अपने एडमिन को, जिसको जिसको इंटरव्यू का आई भी नहीं आता, क्योंकि उसको इंटरव्यू लेना पसंद नहीं है। इसको भी पसंद नहीं है, लेकिन पसंद ना आने के बाद भी ये करता है, और ये पसंद ना आने के चक्कर में करता ही नहीं। So if you see, there's a list of things. तो ये लोग जो कामयाब हैं, ये वो क्यों करते हैं, ये क्यों वो काम करते हैं जो उनको पसंद नहीं, क्यों ये अपने आप को बार बार उस मुश्किलात में डालते हैं। उसका आंसर एक ही है कि ये इसलिए डालते हैं अपने आप को मुश्किलात में, क्योंकि वो काम करने में जो उनको पसंद नहीं आते, ये वो बन जाते हैं जो ये बन सकते हैं। They achieve and accomplish those things which they want to achieve in life. तो क्वेश्चन ये है हमारे सामने that हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और उस अचीव करने के लिए हम क्या गिव अप करना चाहते हैं, right? And there's no pain. Actually, लोग बोलते हैं ना कि you're going to pay a price, you got to pay a price for a success. There's no price for success. There is always, you reap the benefits of success. You never pay the price. Zig Ziglar बहुत पहले ऐसा बोलते थे, बार बार उनकी किताबों में वो लिखते थे that you never pay the price. You always reap the benefits of hard work. You never pay the price of slogging late hours. You always reap the benefits. You never pay the price of for a good body. You reap the benefits of a good body. You never pay the price for getting yourself trained and tutored and mentored. You always reap the benefits of mentoring. You only pay the price when you have not mentored yourself, when you have not to focus on or not paid done things which you should have done. You always pay the price then. लेकिन अगर आपने मेहनत करी है, that's not a price. You reap the benefits in the future. तो कामयाबी के लिए मुझे लगता है वो काम शुरू करिए जो आपको पसंद नहीं है लेकिन जरूरी है। वो काम करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, and you will see that success is just around the corner. I think this is the biggest insight you can take away for this year. And every HM I'm adding on. Every HM I'm building on for you all. कि आप एक और चीज कुछ लेके जाइए, एक और चीज समझिए, जिससे आपके आने वाला साल, आपका आने वाला हफ्ता, आपका आने वाला दिन, you can live a better life. And I've shared you last time also कि कहीं मैं मिल जाऊं रास्ते में, तो मुझे ना अपनी कामयाबी की कहानी सुनाना। मुझे ऐसे मत मिलना कि तुम्हारे पास कुछ सुनाने को ना हो। You should be able to tell me कि don't tell me sir I've been listening to your HMs. मुझे खबरदार किसी ने बोला कि I've been listening to your HMs. मुझे ये बोलना कि sir I've been listening to your HMs and this is what I have become. This is what I have gained. This is what I have achieved. And that is what I would love to listen to you. और कहीं मैं टकरा गया और तुम्हारा नाम तो पढ़ते रहता हूँ, कुछ लोगों के नाम जो आते रहते हैं, तो अगर वो नाम तुमने बताया कि this is what I am, this is who I am, and if I would ask you what has happened in your life, you better have some story to tell me, right? इतना तुम लोग कंज्यूम करते हो यार, हफ्ते हफ्ते कंज्यूम करते हो, so much of content. तो उस कंजम्पशन को लेकर डाइजेस्ट भी तो करो, कुछ उसमें से निकालो भी तो सही। हाँ जी, मेरे साथ हो कि नहीं? Great. Stay there. I was asked this question by last week, and the question was based on ये सक्सेस में मैंने बात करी है, तो क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, एंड इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आया, कैन यू शेयर ऑन कम्युनिकेशन, एंड आई सेड लेट मी, because communication is a huge subject. I said let me break it into small parts and share with you. तो मेरा let me just share a few insights on communication with all of you so that you can understand this. But उससे पहले मेरा सवाल आपसे है कि what is your understanding of communication?
Chalo. What is your understanding of communication? And I will kind of take a short HM today, right? So I'll just give you some insights on communication and then I'll wind up because I need to move on, and for next HM I'll cover it up. So Mansi says showing your perspective to your people is communication. ठीक है. What else? Communication क्या है? Making sure your message is clearly delivered, instruction to others, expressing ideas and thoughts, need of each other. Oh my God, need of each other. Connect with each other. Sharing of views for a particular thing, message transfer, making sure you listen carefully. Nimesh Desai, this is coming from experience. What is communication? Okay. You can still write, and I'll read that as and when you. So when people creating a bond of understanding, transfer of feeling and emotion. Okay. All of you are right, but some of you are half right, some of you are quarter right. Communication, Anish kya likh raha hai? Ye lamba sa likha hai. Communication is basically being able to convey a piece of information to another person by any means, maybe verbal, non-verbal. Ay shabash. ये एकदम जबरदस्त जो है ना, theoretical answer दिया है. ठीक है. Okay. Now, all of you are right, but some of you, like I said, is you're half right, you're quarter right, you're 10% right. Nobody is wrong. So this means you have the essence of communication. You have the clarity of communication. Let me take it further. And next HM, I'll focus on this concept of communication in depth. But today, just to share with you that communication is not what we speak. What we speak is a small part of communication. Communication starts, in fact, a lot early. It starts a lot early. It starts with we listening. The process of communication starts with we listening, and then, of course, we communicating, and then third part is the other person is listening, and the fourth part is we getting a feedback. ये पूरा एक step by step process है communication का, जो शुरू होता है हमारे सुनने से, टू हमारे बोलने से, टू उसके सुनने में, और फोर्थ उसका फीडबैक आने में, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. So it's a 4-step process. और अक्सर लोगों को लगता है कि ये फोर्थ का सेकंड स्टेप ही कम्युनिकेशन है, and the second step is कि आप कुछ बोल रहे हो. So let me share with you the first part. The first part is called listening. And यहीं पर बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं because we don't listen. हम लोग कहते हैं हाँ सुन रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं. Many times we are hearing, we are not listening, we are hearing. So listening is a lot different than hearing. For example, I'm talking to you, and I'm listening to my voice. At the same time, I'm hearing the waves hitting the poles here, and उसका एक आवाज आ रही है waves की, right? तो waves जो है मैं सुन रहा हूँ in terms of my physiological aspect. I'm hearing the waves, but I'm not listening to the waves. Listening और hearing में बड़ा फर्क है. Hearing जो है ना, वो physiologically हो रही है. It is happening. It is on its own happening. ये एक physically हमारे कान है, तो उसमें आवाज जा रही है, हम सुन रहे हैं, लेकिन वो listening नहीं है. Listening is when information goes here, that information is being processed. उस पे हम विचार विमर्श कर रहे हैं, उस पे हम सोच लगा रहे हैं, उस पे टाइम लगा रहे हैं, वो चल रहा है अंदर, और हम उसको एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं. We're coming to some kind of conclusion. That is something called listening. So listening is not just hearing. And बहुत सारे लोग जो हैं, they hear, and based on that hearing, they feel that they have listened. No, that is not listening at all, right? I'll give you some examples next week. I'll give you some example next week on listening. But as of now, सिर्फ अभी इतना ध्यान रखो कि
लिसनिंग एंड हियरिंग में बड़ा फर्क है, बड़ा अंतर है. तो tonight or today, when you live your life, as the day passes and the week passes, see yourself if you are listening more. So listening is not through the ears. Listening is processing the data. And the best of listening is when you can listen when nothing has been spoken. Am I right or not? कि कुछ भी नहीं बोला गया और आपने सुन लिया. इसका मतलब कानों की जरूरत नहीं थी, आपके होने की जरूरत थी, कि आप पूरी तरह थे वहां पर और किसी ने कुछ नहीं बोला लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ गया. कभी कभी ऐसा होता है ना, आप घर जाते हो, राइट, एंड यू एंटर द होम एंड देयर इज सम काइंड ऑफ अ सन्नाटा, और सन्नाटा होता है तो आप उस सन्नाटे में बहुत कुछ समझ लेते हो. एम आई राइट और नॉट? यू प्रोसेस दैट सन्नाटा, यू प्रोसेस दैट साइलेंस एंड यू से यार कुछ तो है, कुछ तो समथिंग इज नॉट राइट. किसी ने कुछ नहीं बोला लेकिन आपने बहुत कुछ सुन लिया. तो सुनने के लिए किसी का कुछ बोलना जरूरी नहीं है, सुनने के लिए कुछ कानों से जाए वो जरूरी नहीं है. सुनने के लिए you listen, you have to understand that you listen through every source of yours. So you listen through your ears, you listen through your eyes, you listen through your skin, you listen through your nose, you listen through your mouth. You will listen through many ways. और अक्सर लोग जो है सुनने को यहाँ पर इस ऑर्गन तक लिमिट रखते हैं और इस ऑर्गन को भी हियरिंग के मोड पे रखते हैं. एंड दैट इज व्हाई द लिसनिंग इज सो वीक. तो कम्युनिकेशन का सबसे पहला स्टेप, the first step of communication is listening. And I've just shared with you what listening is in the shortest possible way. Next week, I'll go deeper into listening and I'll share with you कि listening क्या क्या करा सकता है, क्या क्या possibility create करा सकता है. So आज के लिए आज छोटा सा HM, आज छोटा ही HM चलेगा. And I thought let me wind up early and let me also enjoy this beautiful lovely place. Because morning में there's kayaking here, I want to go for kayaking, I want to go for snorkeling, and और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ कर सकते हैं. So just want to rush. और यहाँ पर ना एक चीज और देखी मैंने, सब चीज इंडिया में ना हॉस्पिटैलिटी इतनी बढ़िया है. You go to a 5-star, you go to any good hotel in India, you will have a class service. If you go abroad and you go to the best of 5 stars, you would somewhere see the difference there. So यहाँ पर दे आर कट टू कट. अगर 10 o'clock ब्रेकफास्ट है तो उसको 10:01 भी नहीं करेगा वो. 10 बजे मतलब 10 बजे रात को 10 o'clock they will wind up the kitchen where their the restaurant. So 10 बजे मतलब 10 बजे you cannot go inside. और and I was sharing with the team there yesterday कि you should come to India, you should work in a 5-star India. Service industry. But anyways, तो इसलिए यहाँ पर सब टाइम की लिमिटेशन है. उस टाइम में हमें सब कुछ करना है. एंड उस टाइम में मैंने HM भी क्विज दिया. शाली एक्सपेक्ट दिस. सो जाने दे. नहीं मैं मैंने कहा कहीं को तो बताऊं मैं ये है. तो we listen a lot. I listened a lot as to what kind of service they have here, in spite of the kind of one of the best resorts they have in Maldives. But ultimately the service तो इंडिया में अच्छी है यार. You go to a Taj, you go to Oberoi in India and you invest your time and your money there. It is so much more beautiful and wonderful. So but यह कि इंडिया में ऐसा उन्होंने बनाया नहीं है पीछे. But anyways, so आज के लिए आज इतना ही. So focus on your listening skills and focus on those 5 resolutions which you have, and also go into the understanding of success which I've shared with you. आज बहुत तुम्हें मैंने दे दिया सोचने के लिए, विचारने के लिए, जीने के लिए. एंड उसमें जियो. और मैं यहाँ पर जीता हूँ कुछ समय इस लवली प्लेस पे. सो दिस इज इट. दिस इज माय रूम एंड दिस इज Maldives for you one more time. और अभी ये हैमक है जो हमारा वेट कर रहा है. So I'm going to be here in this hammock and half an hour or so I'll lie down here आराम से. रात को भी यहाँ तारे बड़े अच्छे दिखते हैं. So आप लोगों का मैंने मालदीव दर्शन करा दिया. So what we have in the comments, okay. So बोलने से ज्यादा आप करने से इंस्पायर्ड हुए. डेडिकेशन. अरे वाह. We love you too, Mansi. Thank you so much and God bless you all. And yes, thank you, Kedar. We'll have a great time. Thank you, Anish. God bless you all. I'll see you next week from Pune, and we will take this listening thing
to beyond what we have understood and heard today. Thank you, Naren. Thank you, Mukesh, Arvind, Rupesh, Chandramohan, Nimesh. We have a live audience also. We have Mansi sitting in front. We have Nimesh from some other room. We have Vaishali from some other room. So they're all watching YouTube mein ya fir on Zoom, this HM. So love you all for being there. You party with me also, and you listen to the HM also every morning. That's nice.